तो अब तक थोड़ा समराइज करें, क्या हमने सीखा, जी क्या समझ में आया। जी, समराइज कर दीजिए। हाँ, कल सूरजा जी नहीं थे, है ना। हाँ जी, मैंने था। राइट। संतोष जी थोड़ा बताइए, कल हमने क्या, एक दो पॉइंट क्या कल हमने कवर किया। पिछले कल मैम मेनली दो चीजों पे फोकस किया था हमने। एक तो हम्म। एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स, यस। और यस। दूसरा था एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल्स। राइट। राइट। तो एब्सोल्युटली। यस, ये दो मेन मेजर पॉइंट्स थे। और जो एडिक्शन वाला पॉइंट था वो मुझे बहुत ही रेलेवेंट लगा था, बिकॉज देयर वाज explanation about the chemical which is released when you get random rewards, और उसके बाद आपको उस चीज की हैबिट या फिर उस चीज की लत कह सकते हैं, बार बार वही खुशी, वही किक, वही सक्सेस पाने की जो इच्छा होती है, उसी में एक ट्रेडर जो है वो फंसता चला जाता है कि मुझे बार बार प्रॉफिट चाहिए, बार बार प्रॉफिट चाहिए, है ना। आई थिंक हमने रैंडम प्रॉफिट्स, रिपीटेड प्रॉफिट्स वाली भी बात पढ़ी थी कि हमें प्रॉफिट्स के लिए भी हम सोचते हैं कि हमेशा प्रॉफिट ही होता रहे और पैसे आते ही रहे, है ना। तो इन यस। चीजों से एक रियल ट्रेडर को जो है वो निकलना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है आपने अगर 10 ट्रेड लिए हैं तो 10 में से दो फेल भी हो सकते हैं, और वो दो शुरू के भी दो हो सकते हैं। दो फेल हो जाए तो कुछ नहीं, आप सक्सेस रहेंगे। हाँ, 8 में सक्सेस होना चाहिए। लेकिन अगर गलत प्रोसेस फॉलो करते हैं तो 10 में से 10 भी फेल हो सकते हैं, फिर वो यस। फ्रस्ट्रेशन का रीजन होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ सबसे, आप सब ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं, कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जब हम पहली बार ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो क्या पहले दिन ही ऐसा सोचते हैं कि आज बिल्कुल ट्रैफिक में ले जाना है, एनएच पे ले जाना है और 100 की स्पीड में चलाना है? नहीं सोचते हैं। जब हम पहली बार स्विमिंग करने जाते हैं तो क्या ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल आज अच्छे से स्विमिंग हो जाएगी, एक प्रोफेशनल की तरह? वो भी नहीं सोचते हैं। जब पहली बार नौकरी में जाते हैं, जॉब पे, तो भी पहली बार पहले दिन ही ये नहीं सोचते हैं कि अगले ही महीने ना सैलरी डबल हो जाए। उधर भी बड़े स्टेबल माइंडसेट के साथ जाते हैं कि धीरे धीरे काम करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो इंक्रीमेंट होगा। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या होता है कि पहले दूसरे तीसरे या चौथे पांचवें में ही हमें लगने लगता है कि पैसा जो है सो बन नहीं रहा है, बनना चाहिए या तुरंत आना चाहिए। तो मैं ये माइंडसेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ इनफैक्ट, कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ इतनी मारामारी मचाने लगते हैं हम, और जबकि और जगह इतने काम एंड कंपोज रहते यहाँ पे देखता एक्सपेक्टेशन नहीं है ना मैम, स्क्रीन के सामने। एक्सपेक्टेशन है। हैं। क्या है? एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बढ़ जाती है ना, क्योंकि इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन देख के आदमी को लगता है ना, एमटीएम स्विंग हो रहा है इतना ज्यादा, और एक बार में इतना आ रहा है जा रहा है, तो मतलब हमेशा लगता है कि जा तो रहा है, आ भी इतने अधिक सकता है एक बार में। हम्म। मैम यहाँ पे तो पैसा है ना, पैसा बहुत गंदी चीज है। अरे ऐसा नहीं, नहीं है। लेकिन पैसा तो नौकरी में भी है, मैंने नौकरी का भी एग्जाम्पल दिया उधर। लेकिन उधर तो नहीं सोचते हैं दूसरे ही महीने में सैलरी डबल हो जाए, छोड़ दूंगा, काम नहीं करूंगा, या बहुत ज्यादा काम करूंगा, 100 गुना करने लगूंगा, चल कोई ये और कोर्स कर लेता बहुत हूँ, बुरी पहले चीज ही है महीने मैम। में सोचते हैं क्या? मैम लालच बहुत बुरी चीज है। तो आंसर इसका मतलब लालच ही है। हाँ, लालच ही है मैम, और क्या। अब पद्मांग कुछ बोल रहे हो? लालच 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 इज सबसेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए लालच ज्यादा है। हाँ। एक्सपेक्टेशन अगर हमारी अगर मतलब कि प्रोसेस के हिसाब से है, तो आई थिंक वो लालच सेकेंडरी हो जाएगा फिर। अल्टीमेटली तो पैसा दिखता है तभी लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते ही, ऑब्वियस सी बात है वो तो। और वो नेचुरल सी बात है। और वही उसी पे कंट्रोल करना ही तो अल्टीमेटली एटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। क्योंकि मुझे लगता है कि 90% लोग किसी और का सक्सेस देखकर स्टॉक मार्केट में आते हैं, पहली बात।
कहीं ना कहीं से किसी न किसी से वो जो बीज डला होता है ना, कि यार मैंने बहुत पैसे बनाए हैं, तू भी बना ले, तू भी सीख ले। या फिर अरे मेरा वो दोस्त है, या कुछ हम यूट्यूब वीडियो में देखते हैं, तो वो चीज हमें खींच लाती है। एम आई राइट? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। और यहाँ आते ही हम पहले दूसरे तीसरे महीने में सोचते हैं कि अब बस थोड़ा सा 2 महीने का 3 महीने का कहीं से हमने कोर्स किया या कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ बुक्स पढ़ी, अभी हमें आ जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा होता नहीं। और बिना प्रोसेस फॉलो करने के ते ही हम मार्केट में पैसे लगाते हैं, पैसा लूज करते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, फिर और सीखते हैं और पैसे लगाते हैं। तो समवेयर कहाँ गलती कर रहे होते हैं? अभी तक तो हमने काफी साइकोलॉजी की बात की इसमें, तो क्या समझ में आया अपना समझ में पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ। समझ में यही है कि अभी और बुक पढ़ना है और समझना है और उसको ढालना है। और इसमें माइंड सेट का ही सारा गेम है। माइंडसेट एंड एटीट्यूड का ही सारा गेम है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह यही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा ही है कि इसमें आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो 20% रोल है उसका, 80% आपका माइंडसेट है। हम्म। तो आपकी कितना अच्छे आप एनालिस्ट हो, आप वो डिपेंड नहीं करता है। एक ठीक ठाक आपका व्यू है, उस बेसिस पे भी पैसा बना सकते हो। लेकिन आपका अगर एटीट्यूड में दिक्कत है और साइकोलॉजी आपकी एज पर ट्रेडर जो होनी चाहिए मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आप हो सकता है बहुत अच्छे एनालिस्ट होने के बाद भी पैसा नहीं बनाओगे, लूज करोगे। तो फिर तो सर अल्टीमेटली जो ये प्रोसेस, बात। क्योंकि इसमें वो जो बता रहे ना विनिंग एटीट्यूड, जो उसमें बताया था कि आपका हमेशा एक्सपेक्टेशन हम लोग की सबको यही होती है कि हम जो पैसा डाल रहे हैं तो ये जीतने के लिए ही डाल रहे हैं, इसमें लूज होगा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे उस चीज को कि हमें कैसे घाटा हो गया, तो हम बैठे रह जाएंगे उसमें फिर कि हमें तो लॉस होना ही नहीं चाहिए। और एक छोटे लॉस की ना लेके हम बड़े लॉस लेके चले जाएंगे। वही अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे, नहीं अगर हम गलत होंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे और हट जाएंगे कि दैट आई एम रॉन्ग, ये ठीक है, गलत हो गया, हट जाते हैं। बट वही होता है कि एक्सपेक्टेशन हमें हमेशा जीतने की होती है और वो लॉस से बड़ा लॉस, बड़े से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है फिर। लेकिन क्या ऐसा होता है? अब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स भी देखती हूँ जीरो पे आउट हो जाते हैं। एवरी डे तो सेम नहीं होता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये आंसर ना मेरे सलील सर दे सकते हैं अच्छे से, उनको एक्सपीरियंस हो गया है ना। सलील सर ये बोलते हैं कि जो 1 लाख को 10 लाख हाँ, बनाता है वही असली ट्रेडर होता है। जो 10 लाख लेकर मार्केट में उतरता है वो असली ट्रेडर नहीं होता है। राइट। जो अपनी बलबूते से बनाता है और धीरे धीरे बनाता है वही असली ट्रेडर होता है, क्योंकि तब तक वो उतनी जर्नी जी चुका होता है, उस माइंडसेट तक पहुंच चुका होता है, तब तक वो इन किताबों को पढ़ चुका होता है। ओके। तो अगर अच्छा, हाँ, दूसरी बात ये है कि इन सेशंस में अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि भाई इन मेंटल जो हम बातें पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो बातें हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ अगर कुछ टेक्निकल चीजें जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप सर के साथ क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ रहा है और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है? तो वो जरूर नोट करके रखेंगे सब, और क्लास में सर से पूछेंगे, उनका दिमाग खाएंगे। चलिए हम करते ओके। हैं। ओके, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर 3। Although the words taking responsibility sounds simple, the concept is neither easy to grasp nor easy to put into practice in your trading. We have all heard the words and been confronted with the need to take responsibility so many times in our lives that it is easy to take for granted that we know exactly what the phrase means. Taking responsibility in your trading and learning the appropriate principles of success are inextricably connected. You have to understand with every fiber of your being the ways in which you are and are not responsible for your success as a trader. Only then can you take on the characteristics that will allow you to join the select group of traders who are consistently successful in the markets. At the end of chapter 1, I introduced the idea of stepping into a future projection of yourself. In other words, the consistently successful trader that you want to become doesn't exist yet. You must create a new version of yourself, just as a sculptor
creates a like Sculpture. yeah sculpture yeah No, creates a like sculpture. sculpture अरे yeah वो बनाने हम, वाला हाँ हाँ, चीनी से बनाने मूर्ति वाला creates a मूर्ति। yes मूर्ति का creates a likeness of a model. राइट राइट। थैंक यू सो मच संतोष जी, अपनी लर्निंग शेयर कीजिए हमारे साथ। Yeah, so as subject says taking responsibility, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम सोचते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इतनी सारी चीजें जब डेली रेगुलरली होने लगती है तो वी ट्राई टू टेक इट ग्रांटेड। सेम सेम मार्केट में भी होता है। व्हेन सपोज वी जब हम ट्रेड लेने लगते हैं तो डेली का एक दो ट्रेड जब शुरू हो जाता है लेना तो हम इरिस्पॉन्सिबली तरीके से लेने लग जाते हैं, कई बार स्टडी को फॉरवर्ड कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो हाँ हाँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं बुक शेयर करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहता है? हाँ, अभी बिल्कुल परफेक्ट आवाज। The tools you will use to create this new version of yourself are your willingness and desire to learn, fueled by your passion to be a successful. If the willingness and desire to learn are if if the willingness and desire to learn are your primary tools, then what is your medium? An artist creating a sculpture can choose to work in a number of mediums: clay, marble, or metal, for example. But if you want to create a new version of your but if you want to create a new version of your personality that express itself and a consistency of the successful trader, you have only your beliefs and altitudes. The medium for your artistic I cannot pronounce that endeavor will be your mental environment, where with your desire to learn you can restructure and install the beliefs and attitudes that are necessary to achieve your ultimate goal. I am assuming your ultimate goal is consistency. If you are likely most traders, you don't realize the fullest potential of your opportunities available to you to realize more and more of that potential to make it more and more or a reality in your life. Primary goal has to be learn how to think like a consistent successful trader. Remember, the best traders think in a number of unique ways. They have acquired a mental structure that allows them to trade without fear and at the same time keeps them from becoming reckless and committing fear-based errors. The mindset has a number of components, but the bottom line is that successful traders have virtually eliminated the effects of fear and reckless from their trading. These two fundamental characteristics allows them to achieve their consistent result. When you acquire the mindset, you too will be able to trade without a fear. You will no longer be susceptible. You will no longer be susceptible to the multitude. दिख रहा है ना स्क्रीन पर? ये वाला लाइन पर। There is a bandwidth issue. I cannot. अच्छा, कोई बात नहीं, ये ठीक है। ये दिख रहा है अभी? हाँ। Of fear-based errors that comes from the rationalizing, subconsciously distorting information, hesitating, jumping the gun, or hoping. Once the fear is gone, there are just won't be a reason to make their errors, and as a result, they will virtually disappear from your trading. However, eliminating fears is one half the equation. The other half is the need to develop the resistance to
Restraint. The other half is the need to develop restraint. No, फिर there has excellent been a traders. bandwidth issue. Hello, हाँ ma'am. हाँ, यहाँ से स्टार्ट I करेंगे. cannot see. Excellent I traders. cannot see clearly. ये इधर excellent traders have learned, यहाँ से करना है. Excellent traders. Can you please scroll up? Okay. अभी आ रहा है, दिख रहा है? Yes. Excellent traders have learned that it is an essential to have internal discipline or a mental mechanism to counteract the negative effects of euphoria or the overconfidence that come from a string of winning trades. For a trader, winning is extremely dangerous if you have learned how to monitor and control yourself. Yes, If very good, we very start, good. प्रकाश जी, अब आपसे आपकी लर्निंग लेते हैं. मैम, हाँ हाँ, तो बोलिए. ट्रेडर अब सॉरी, तो एक ट्रेडर को एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए. जैसे कि उसका जो एटीट्यूड से, मतलब उसको एक मीन्स हम मतलब हम सब में ग्रीड होती है कि कैसे हम मतलब एक कंटिन्यूस सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं, और हमें फिर वो ग्रीड को कंट्रोल कैसे रखना है और प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, और हमारे जो मेंटल एनवायरनमेंट है उसे कैसे शांत रखना है. ये मतलब मोस्ट क्या बोलना चाह रहा हूँ, मोस्ट एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है. और अपने मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी हमें मार्केट्स में, पर हमें उसे कैसे देखना है, एज ए ग्रीडीनेस नेचर से देखना है, या फिर उसे हम मेंटली कैसे एज ए प्रोसेस उसे देखना है. ये एक एनवायरनमेंट रहता है जो मेंटली, जो मतलब एक ट्रेडर के साथ वो जूझ रहा रहता है ये प्रॉब्लम्स के साथ. राइट आई राइट. एम ऑडिएबल? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल. संतोष जी, आप कुछ शेयर कर रहे थे. हम इस पैराग्राफ में जो इन्होंने डिस्कस किया है शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट के बारे में, तो इसमें दो चीजें जो उन्होंने बताई, विलिंगनेस एंड डिजायर टू लर्न व्हाटएवर वी आर लर्निंग इन द मार्केट, जिससे कि आपका नया वर्जन इंट्रोड्यूस हो सकता है. और वो होगा इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ विद a good attitude to achieve the consistency, which is the utmost goal when you are trading, and to acquire a mental structure to trade without fear. राइट. तो ये सब चीजें तभी हो पाएगी अगर आपका एटीट्यूड और योर बिलीफ सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर, एंड इफ इवन इफ यू आर हैविंग विनिंग स्ट्रीक इन द मार्केट, अगर आप जीतते जा रहे हो, मतलब ट्रेड लेते रहो और मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आता रहे, फिर भी आपका जो डिसिप्लिन और मेंटल मैकेनिज्म हिले ना. बोलने के हाँ लिए. हाँ, एब्सोल्युटली. एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी ने कही कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट हमें देता है. तो अभी सपोज फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 100 रुपीज हैं, और आज मुझे गलत ट्रेड में जाकर 100 में से मैंने 90 रुपीज लूज कर दिए. तो कल जो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखने वाली है, उसके लिए मेरे पास कैपिटल ही नहीं बचेगा. यस. तो इस चक्कर में कि मैं आज 100 रुपीज, मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी करके आज ही 100 को 200 बनाना है, उस चक्कर में हमारा 90 रुपीज लूज हो जाते हैं. तो वो जो यस. मेंटल बैलेंस अपना बनाए रखना होता है और सही जगह पर सही ट्रेड लेने की जो बात होती है, वो तभी आ सकती है जब आप कंसिस्टेंटली सीखते रह रहे हो और लर्निंग एटीट्यूड हो आपके अंदर. ऐसा नहीं लगे कि भाई मुझे तो अब सब कुछ आ गया है ना. यस. तो एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू. और हमने पिछले ही चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद ही आप उसमें सुधार की गुंजाइश होती है. राइट. राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां. अ, However, that's just not the case. The consistency you seek is in your mind, not in the markets. Its attitude and beliefs about being wrong, losing money, and the tendency to become reckless when you are feeling good that causes most losses, not technique or market knowledge. For example, if
If you could choose one of the following two traders to manage your money, which one would you pick? The first trader uses simple, possibly even mediocre trading technique, but possesses a mindset that is not susceptible to subconsciously distorting market information, hesitating, rationalizing, hoping, or jumping the gun. The second trader is a phenomenal analyst, but is still operating out of the typical fears that make him susceptible to all of the psychological maladies that the order trader is free of. The right choice should be obvious. The first trader is going to achieve far better result with your money. Attitude produces better overall result than analysis or technique. Of course, the ideal situation is to have both, but you really don't need both, because if you have the right attitude, the right mindset, then everything else about trading will be relatively easy, even simple, and certainly a lot more fun. I know for some of you this may be difficult to believe or even distressing, especially if you have been struggling for years to learn everything uh, it can about the market. Interestingly, most traders are closer to the way they need to think when they first begin trading than at any other time in their career. Many people begin trading with a very unrealistic concept of inherent dangers involved. This is particularly true if their first trade is a winner. Then they go into the second trade with a little or no fear. If that trade is a winner, they go into the next trade with even less concern for what would otherwise be an unacceptable possibility of a loss. Each subsequent win convinces them that there is nothing to fear and that trading is the easiest possible way to make money. This lack of fear translates into a carefree state of mind, similarly to the state of mind many great athletes describe as a zone. And if you have ever had the occasion to experience the zone in some sport, then you know it is a state of mind in which there is absolutely no fear and you act and react instinctively. You don't weigh you don't weigh alternatives or consider consequences of second guess yourself. You are in the moment and just doing it. Whatever you do turns out to be exactly what needed to be done. Most athletes never reach this level of play because they never get past the fear of making a mistake. Athletes who reach the point where there is absolutely no fear of the consequence of screwing up will usually and quite spontaneously enter into the zone. By the way, a psychological zone is not a condition you can will yourself into. The way you can will yourself into a feat of endurance. It is a state of mind you find yourself in that is inherently creative, and usually if you start thinking about your action at a rational or conscious level, you pop right out of it. Even though you cannot force or will yourself into a zone, you can set up the kind of mental conditions that are most conducive to experiencing the zone by developing a positive winning attitude. I define a positive winning attitude as expecting a positive result from your efforts with an acceptance that whatever results you get are a perfect reflection of your level of development and what you need to learn to do better. That's what the great athletes have, a winning attitude that allows them to easily move beyond their mistakes and keep winning. हाँ अभी जी. ओके ओके, बहुत बढ़िया। अभी चलिए अब आपसे आपकी लर्निंग शेयर करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। Expansion of two types trader and which trader you will choose as your friend. That sort of thing is written. One is rationalizing, hopping or jumping the gun. Second trader is a phenomenal analyst but is still operating out of the typical fear that makes him susceptible to all types of psychological maladies. And the author has finally defined what is zone. Zone is a place where though you do some mistake that is accepted and you are totally fearless for your fits. राइट, Zone is defined. There is no fear. और कोई शेयर करेगा? इस मैम
या प्लीज। दो तीन चीजें जो मेरे को थोड़ी कैची लगी। एक तो इन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी शुड बी इन द माइंड, कि आपका जो जब ट्रेड करते टाइम आप कंसिस्टेंसी अपने दिमाग में होनी चाहिए, ना कि मतलब तो दिमाग में होगी तो ट्रेड में आई जाएगी। और सेकंड पॉइंट है, अगर इवन इफ यू आर नॉट ए गुड एनालिस्ट, नॉट दैट सुपर डुपर एनालिस्ट, बट योर माइंडसेट इज करेक्ट, देन यू कैन इजीली मेक मनी अदर देन अदर। और दूसरी साइड, अगर आप एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन माइंडसेट वैसा है कि मतलब डगमगाता रहता है, then you may lose money. And third one is zone. It's like cricketer is in the form, right? तो वो फॉर्म आपका माइंडसेट से और विनिंग एटीट्यूड से आएगा, जो जोन के बारे में बोल रहा है। दैट्स इन द फॉर्म, आउट ऑफ द फॉर्म काइंड ऑफ स्टफ। राइट। अभी यहाँ क्या होता है, जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं या जो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक ही दिन में पैसे बन जाएंगे, और एक दिन में रातों रात कहीं पैसे नहीं बनते। कभी कभी बनते हैं, लेकिन वो भी तभी बनते हैं जब आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो। तो ये जो अभी बात हुई ना कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की और पेशेंस की, एक्चुअल में ये चीजें लैक कर रही होती हैं कहीं ना कहीं। हमें पता भी होता है, फिर भी हम नहीं समझ रहे होते हैं या समझा नहीं पा रहे होते अपने आप, या फिर आज तक शायद डिस्कस नहीं किया इन चीजों को। तो वो पेशेंस रखना, एक पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करना, ऐसा माइंडसेट बनाना, कूल रहना, काम रहना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वरना ऐसा तो नहीं है स्टॉक मार्केट में लोग पैसा नहीं कमा रहे, कमा भी रहे हैं, गवा भी रहे हैं। कमाने वाले का माइंडसेट कुछ और है, गंवाने वाले का कुछ और है। तो हमें किस खेमे में पहुंचना है वो कैसे डिसाइड होगा? वो ऐसे डिसाइड होगा कि हम क्या माइंडसेट रखकर आगे बढ़ रहे हैं। एम आई राइट? Yes. Others get bogged down in negative self criticism. यहाँ से Others get bogged down in negative self-criticism, regret, and self-pity. Not many people even develop a positive winning attitude. The curious anomaly of trading is that if you start with a winning trade, you will automatically experience the kind of carefree mindset that is a byproduct of winning attitude. Without having developed the attitude itself. I know this may sound a bit confusing, but it has some profound implications. If a few winning trades can cause you to enter into the kind of carefree state of mind that is an essential component to your success, but it is but is not founded on the appropriate attitude. When what you have is a prescription for examine misunderstanding about the nature of trading that inevitably result in both emotional and financial disaster. Putting on a few winning trades does not mean you have become a trader, but that is the way it feels, because it taps us into a state of mind that only the most accomplished people experience on a consistent basis. The fact is, you don't need the slightest bit of a skill to put on a winning trade, and if it is possible to put on one winning trade without the slightest bit of skill, it is certainly possible to put on another. ये last line है ना. I know of several people who started their trading career with fairly substantial string of winning trades. So basically last paragraph में ये discussion हो रहा है कि कई बार कुछ होता है कि फ्लूक से अच्छे ट्रेड्स हो जाते हैं, जिसमें कि वो ट्रैप होता है बेसिकली वो बिलीव कराने के लिए कि नहीं आप अच्छे ट्रेडर हो, मतलब आप कर पा रहे हो क्योंकि आपके ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, बट इट इज नॉट गुड अप्रोच। और ये धोखा भी हो सकता है क्योंकि कंसिस्टेंटली जब तक आप उस चीज को नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब तब तक आप वो नहीं हो, मतलब कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कई बार जैसे कि नोविस ट्रेडर आते हैं मार्केट में, लगातार 5-6 रैंडम ट्रेड्स लेते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो उनको लगता है कि अब हम कर सकते हैं, आई थिंक इट इज अ गेम, जस्ट अ वीडियो गेम, अब पैसा बनेगा। बट वही धोखा होता है और नेक्स्ट एक ही बार में पूरा सफाई भी हो सकता है। तो बेसिकली विनिंग ट्रेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट, कि आपने एक ही चीज को बार बार करते हुए
सही ट्रेड लेते हुए थोड़े थोड़े करके रेगुलर पैसे बनाए, देन यू बिकम अ रियल ट्रेडर एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। राइट। आगे बढ़ते हैं। When you are feeling confident and uncompounded by fears and worries, it is not difficult to put on a string of winning trade, because it is easy to get into a flow, a kind of natural rhythm where what you need to do seems obvious or self-evident. It is almost as if the market screams at you when you when to buy and when to sell, and you need very little in a way of analytical sophistication. And of course, because you have no fear, you can execute your trades with no internal argument or conflict. The point I'm making here is that winning in any endeavor is mostly a function of attitude. Many people are certainly aware of this, but at the same time, most people don't understand the significant part attitude plays in their result. In most sports or other competitive activities, participants must develop physical skill as well as a mental skill in the form of strategies. If opponents are not evenly matched in the skills dependent department, the one with superior skills usually, but not always, wins. When an underdog beats a superior opponent, what is the determining factor? When two opponents are evenly matched, what is the factor that tips the balance one way or the other? In both cases, the answer is attitude. What makes trading so fascinating and at the same time difficult to learn is that you really don't need lots of skills. You just need a genuine winning attitude. Experiencing a few or more winning trades can make you feel like a winner, and that feeling is what sustains the winning streak. This is why it is possible for a novice trader to put on a string of winning trades, when many of the industry's best market analysts would give their right arms for a string of winning trades. The analysts have the skills, but they don't have the winning attitude. They are operating out of fear. The novice trader experiences the feeling of a winning attitude because it is not afraid. But that doesn't mean he has a winning attitude. It only means he has not experienced any pain from his trading activities to make him afraid. Eventually, our novice trader will experience a loss and begin and being wrong, regardless of how positive is his feeling. Losing and being wrong are inevitable realities of trading. The most positive attitude imaginable, coupled with the best analytical skill, cannot prevent a trader from eventually experiencing a losing trade. The markets are just too erratic, and there are too many variables to consider for any traders to be right every time. What happens when a novice trader finally does loss? What effect will it have on his carefree state of mind? The answer will depend on his experience going into the trade and how he interprets the experience, and how he interprets the experience is a function of his belief and attitude. What if he is operating out of a belief that there is no possible way to avoid a loss, because losing is a natural consequence of trading, no different from, let's say, a restaurant owner incurring the expense of having to buy food. Furthermore, suppose that he has completely accepted the risk, meaning that he has considered and accounted for all of what would otherwise be the unacceptable possibilities in the market's behavior, both financially and emotionally. With these beliefs and expectation, it is unlikely that he would experience a deterioration of his attitude and would simply go on to the next trade. By the way, this is an example of an ideal set of trading belief and attitude. देखते हैं कितना है। और Now suppose last paragraph. Now suppose that he has not completely accepted the risk
what if his expectation didn't take into account what if his expectation didn't take into account any market behavior other than what he wanted? From this mental perspective, if the market doesn't do what he wants, he is going to feel pain, emotional pain. Expectation are our mental representation of how future moment in the environment is going to look, sound, feel, smell, or taste. Depending upon how much energy is behind the expectation, it can hurt a lot. It is not fulfilled. Of the two different perspectives I just described, which one is likely to be held by our novice trader? The latter, of course. Only the very best trader have acquired the perspective described in the first scenario. And as I indicated in the chapter 1, unless these very best traders grew up in a successful trading families or had super trader or mentor where appropriate attitude about risk and loss were instilled in them from the very beginning of their trading career. Virtually every one of them had the common experience of losing one or more fortune before they realize how they need to think in order to be consistently successful. It is fundamental shift in the attitude that accounts for their success, not some brilliant realization about the market, as most of the people erroneously assume. This erroneous assumption is prevalent among the traders simply because very few of them really understand at the deepest level just how critical a component attitude is in determining one's success. So basically पूरी कहानी में यही बताया गया कि कंपेयर किया गया कि नोविस ट्रेडर का और एक सक्सेसफुल ट्रेडर और जैसे कि म्यूचुअल उसमें बात किया था ना कि किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एटीट्यूड होता है. बेसिकली दे आर कंपेयरिंग एटीट्यूड ऑफ नोविस ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर. नोविस ट्रेडर बेसिकली उनको विनिंग एटीट्यूड नहीं होता. उनको लगता है कि जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है. एट द सेम टाइम प्रोफेशनल ट्रेड का एटीट्यूड विनिंग नहीं होता. उनको हमेशा हर ट्रेड में जब एंट्री करते हैं वो प्रोसेस पे फोकस करते हैं, ना कि उनको ये रहता है कि हमेशा हम सही होने के लिए ट्रेड कर रहे हैं. तो सही होना है ये उनका बिलीव नहीं होता, क्योंकि उनको बोलता है प्रोसेस हम ले रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं एंड रिजल्ट उसका कुछ भी हो सकता है. ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. बट जब नोविस ट्रेडर की एक विनिंग स्ट्रीक चलती रहती है तो उसके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मैं जो भी करता हूँ हमेशा सही होता हो. और उसको जब धोखा होता है तब उसको इमोशनल पेन और ये जो फॉर्चून लॉस वाला जो होता है कि एक बार में पूरी कैपिटल वाइप आउट होने वाला, वो दर्द फिर सबसे बड़ा दर्द होता है. उसके बाद फिर वो या तो मार्केट हट जाता है या तो फिर वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. तो यही एटीट्यूड के बारे में ज्यादा इसमें डिस्कस किया गया है कि एक विनिंग एटीट्यूड पे फोकस नहीं होना चाहिए. एटीट्यूड हमारा प्रोसेस पे होना चाहिए कि हमारा एनालिसिस जो भी है इट कैन गो आइदर वे. इट कैन बी इन आवर फेवर और इट कैन गो अपोजिट टू आवर फेवर. राइट. एनीवन एल्स कोई और शेयर करना चाहेगा? हम ऑलरेडी टाइम से ज्यादा बढ़ चुके हैं. 9:05 हो गए. थैंक यू सो मच. रोज की तरह हम 5 मिनट लेंगे और अपने गोल्स एंड ग्रैटिट्यूड लिखेंगे आज का. संतोष जी, आप पूछ रहे थे गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं या एक ही लिखना है. तो आपके माइंड में जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो आप लिखिए और हम उसको, मैंने कल भी कहा था, एनालाइज करेंगे आफ्टर 30 days and then you will actually reach to your actual goal. ठीक है. So I'm giving you 5 minutes. Please write down your goals and gratitude for today.